25 के तहत स्कूलों में तबाहाल तालीमी निज़ाम हो, तालीम और सेहत बिक रही हो, महंगे दामों बिक रही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो, वर्ल्ड बैंक के पैसे कहाँ लग रहे हैं किसी को खबर नहीं। और इसी तरीके से इस शहर के ऊपर जो बम गिर रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल बम की सूरत में हो, चाहे वो बिजली के बम की सूरत में हो, जो कि पूरे पाकिस्तान से अलहदा करके इस शहर को has also proven that if an unprovoked, unjustified war is imposed upon Pakistan, we have the capability, we have the potential to respond back effectively. And I think the deterrence that we have created in this region has contributed to maintaining peace. Otherwise, this false notion of rising India or shining India, which was being portrayed all over the world, and let me allow to say that India had assumed the position of a bully in this region. The way there has been a surge in terrorism in Pakistan over the past few years, we have credible evidence that this terrorism is not only foreign funded, but India has a big role to play in creating disruption and creating law and order situation in our provinces. When the Pahalgam incident happened, and on the narrative front, we were faced with a challenge. The biggest argument that we had in our favor was the fact that Pakistan is the biggest victim of terrorism. So how can a nation which is actually facing terrorism, and I often say, and whenever I was invited to appear on international media, my argument was always that name any other country which has laid down 90,000 lives in the war against terrorism. And Pakistan, in fact, is a shield or a wall between terrorists and the rest of the world. So when one Pakistani citizen lays down his or her life in this war against terrorism, yes, it is for the safety and security of Pakistan, but it is also to make the world a safer place. And I would take this beyond South Asia, because had it not been for the sacrifices that our armed forces, our civilians, our law enforcement agencies, our citizens, our children have made in this war, which is a Indian-funded terrorism that has been imposed upon us, then these terrorists would have been loitering the streets of major capitals of the world. So when baseless allegations were leveled against Pakistan, and it was alleged that Pakistan was responsible for the Pahalgam incident, so I think we made our point that how can a nation which is suffering even today at the hands of these terrorists sponsor such acts? And we are facing these incidents every other day. One incident happened in India, and they started leveling baseless allegations. I think it was a diplomatic masterstroke when the Prime Minister, speaking at Kakul, offered an investigation into the Pahalgam incident. And instead of responding to that demand of an impartial and fair investigation, India's war hysteria, India's warmongering actually increased. But I am very
happy and proud that our allies and countries which had a say in this whole crisis stood by Pakistan for the reason that we played our diplomatic cards really well. And we saw that based on our narrative, questions were asked in India, and they continue to be asked. And I think Narendra Modi has never been on a weaker footing than he is now. Because the civil society in India, the media, the intelligentsia, the opposition members alike are all questioning his policies. That without going into an investigation into an incident, they resorted to aggression, killing innocent civilians in Pakistan. And right after Pahalgam, I had taken a group of journalists to a place in Kashmir known as Bela Noor Shah, where it was alleged by the Indian media that they were terrorist camps, and we showed them around that life was going on as usual. And we had friends from international media actually showing what a peaceful place that is. And these allegations are absolutely baseless and fabricated. And the night that India attacked Pakistan, the next day, we had planned to take journalists to Muridke and Bahawalpur to dispel this impression that there are terrorist camps in Muridke, Bahawalpur. And the day we were supposed to travel, the night before, India resorted to these attacks. So I think on the narrative front, on the diplomatic front, being desirous of peace, we also established that our desire for peace must not and should not be mistaken for our weakness. And this desire for peace was mistaken by India as a weakness, but I think the response given by our armed forces, our valiant soldiers, has proven our military might to India that we are capable of giving a befitting response to any unprovoked aggression. And the whole idea before Pahalgam was to weaponize water. And legally speaking, if you want to disrupt peace, you will always interfere with an international treaty. And Ahmed Bilal Sufi Sahib is sitting here. How is it possible that a treaty, which is a legally binding document, be suspended or be held in abeyance unilaterally without the consent of the other party? So I think at the back of their mind, they wanted to weaponize water. And I think Pakistan very rightly and very timely held the National Security Council meeting and made it very clear that water is our lifeline and we will make no compromise, and any attempt to subvert or hinder the flow of water will be responded to decisively. So I think that was a very loud and clear message that this natural resource, which is a right of our 240 million people, cannot be violated. So I think India opened up many fronts because the false notion and the false glorification of this rising India, they actually believed in it. And in fact, this notion, this false notion, had very shaky foundations, and when put to the test through legal means, through diplomatic means, through military means, and through narrative means, the whole premise of this false notion of rising India fell flat on its face. So I think even now, when we talk about the post-war scenario, we say that we are desirous of peace, but that should be based on reciprocity. And that should be based on resolution of all disputes, including Kashmir. And I think one thing which is a very positive outcome of this whole scenario has been that the Kashmir issue has now once again
been highlighted, and you have seen at various occasions, President Donald Trump has directly mentioned the Kashmir dispute as a disputed area which needs resolution. And India cannot usurp the rights of the innocent Kashmiris. And there has to be respect for the UN resolutions, the Security Council resolutions in this regard. So I think for maintenance of peace in this region, Pakistan has always played its role. Pakistan will continue to play its role. And this recent escalation has proven to the world that we as a nation can not only respond to unprovoked aggression, but when it comes to diplomatic means, we have the skill, we have the capability of proving our point to the world. And points well taken. I was hearing speeches of honorable members of this panel. Yes, there is room for improvement. And I would request Ambassador Johar Salim, if a paper could be published right after the session in which you could give recommendations to the government, and I will be sure to pass this on to the Deputy Prime Minister, to the concerned divisions and ministries, so that this session can be productive and we can actually take something out of this and act upon those recommendations which are passed on to us by this esteemed panel. I'm very grateful for this opportunity, and I'm very grateful to the honorable member sitting here. And I assure you on behalf of the government of Pakistan that whatever recommendations are given by this panel, we will do our best to act upon them. And may peace always prevail in this region. And may Pakistan always prosper. Pakistan Zindabad. Thank you very much. इस्लामाबाद में IRS के ज़ेर एहतमाम जनूबी एशिया में क़याम अमन पर पॉलिसी डायलॉग का इनेकाद किया गया है, जिसे वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ खिताब कर रहे थे। आपको बता रहे हैं, इस्लामाबाद में IRS के ज़ेर एहतमाम जनूबी एशिया में क़याम अमन पर पॉलिसी डायलॉग का इनेकाद किया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को बैरूनी पुष्ट पनाही हासिल है। पहलगाम वाक़े का हम पर बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किया गया। शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है बच्चों के ग्रोइंग ब्रेन के लिए नेस्ले लैक्टो ग्रो एक्टिव विद एक्टिव ग्रो। Sabroso chicken cheese paratha. My Telenor app, full time control, full time मनमान। तवानाई सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 780 अरब रुपए कम हो गया। IPPs के साथ मुज़ाकरात से भी 3600 अरब की बचत हुई। वज़ीर आज़म ने वज़ीर तवानाई को शाबाशी का खत लिख दिया। सिंध हुकूमत का जाली खाद और ज़रूरी अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। मॉनिटरिंग टीम सवाल करने और किसानों को मयारी बीज की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का तूफानी बारिशों के बाइस अटक और गुजरात में अमवात पर इजहार अफसोस। वालिदैन से बच्चों को बारिश के पानी में नहाने से रोकने की अपील। जामशोरों में कोटरी बैराज पर पानी की सतह में मजीद इजाफा। नहरों में भी पानी के बहाव में तेजी आ गई। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में झुग्गी की दीवार गिरने से 6 अफराद जख्मी, 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। और हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में तेज रफ्तार कार नाले में जा गिरी, 3 अफराद जख्मी हो गए। एक बार फिर आपको लिए चलेंगे, MQM के रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भरपूर आवाज़ उठाएंगे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अब ये पहले से ये मुतनब्बे कर रहे हैं कि हमें इसका जवाब फ्लोर ऑफ द हाउस चाहिए और हमें हर हाल में एजेंडे के ऊपर सबसे पहले इस बात का जवाब चाहिए। हम आपके इत्तेहादी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इत्तेहादी होते हुए हम अपने लोगों पर जुल्म होता हुआ उसे देख सकें या खुद भी बर्दाश्त कर सकें। एक तरफ पेट्रोल में इजाफा हो जाता है
तो रोटी, कपड़ा, मकान और कब्रिस्तान सबके रेट बढ़ जाते हैं। लेकिन जब पेट्रोल कम होता है तो मजाले किसी बस वाले ने भी किराया कम किया हो 2 रुपए। जहां इस करारदाद की बात है तो पीपल्स पार्टी ने करारदाद की हिमायत जरूर की है, लेकिन पीपल्स पार्टी बरियोजिम्मा नहीं है। आप चोरों से मिले हुए भी हैं, आप के इलेक्ट्रिक से मिले हुए भी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में करोड़ों रुपए हमारे बिलों से लें। ऐसा नहीं हो सकता कि केएमसी में मेयर साहब एमयूसीटी के चार्जेस भी के इलेक्ट्रिक में लगा दें और हमसे करोड़ों रुपए आप वसूल कर लें कि बिजली के बिलों के जरिए आ रहे हैं। हमारे ऊपर तो बिजली का बिल ये है कि अगर 20,000 का बिल आया है तो उसके अंदर ये एमयूसीटी लगा लें आप, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगा लें, फिर फिक्स चार्जेस लगा लें, फिर उसके बाद क्वार्टरली एडजस्टमेंट लगा लें, फ्यूल क्वार्टरली एडजस्टमेंट लगा लें, फिर फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट फ्यूचर लगा लें, सरचार्ज लगा लें, एडिशनल सरचार्ज लगा लें, टैक्स लगा लें, टीवी लाइसेंस फी लगा लें जो कि मस्जिदों से भी लेनी है। तो हमारा तो 20,000 का बिल 32,000 का आता है। 32,000 का बिल हमारा 45,000 का हो जाता है। हम तो पहले ही इतना जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी से भी ये संजीदा कोशिश करें वो कि एक तो ये एमयूसीटी लगाकर आप के इलेक्ट्रिक को आपने मजीद हौसला दे दिया कि तुम जितनी मर्जी चोरी करो, हमारे पैसे कर दो पहले। तो जब वो आप उनसे पैसे लेंगे तो आप उन्हें आंखें कैसे देंगे? जब मुंह खा रहा है तो आंख कैसे शर्माई आएगा? आंख शर्माएगी ना, आप तो नहीं गुर्रा सकते उनके ऊपर। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के बाद में आप ले रहे हैं, साल से ले रहे हैं। तो बहरहाल इस मुल्क से, इस शहर से इंडस्ट्रियलिस्ट जा रहा है, दूसरे मुल्कों में जा रहा है। हमारे पास प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि डॉलर आना चाहिए, फॉरेन रेमिटेंस आना चाहिए। जब पेट्रोल इतना महंगा है, बिजली इतनी महंगी है, तो मैन्युफैक्चरिंग सस्ती कैसे होगी? एक आम घर में डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाने वाला कारोबारी भी सस्ती शय नहीं बना सकता। सारा का सारा या तो चाइना से इंपोर्ट होगा या फिर स्मगल होकर आएगा। लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो तबाह हो रही है, जिसकी बड़ी वजह पेट्रोल और बिजली के बेलगाम नर्क हैं। मैं आखिर में यही गुजारिश करूंगा कि बिजली की कंपनी के इलेक्ट्रिक, माजी में केईएससी, उससे पहले और पता नहीं क्या क्या, आज भी 25 साल पहले जहां खड़ी थी आज भी वहीं खड़े हैं। आज भी चोरी का रोना है, मीटरों का रोना है, लाइन लॉसेस का रोना है, ड्राइंगें नहीं है, फॉल्ट 6-6, 8-8 घंटे में ख़त्म नहीं होते, और तनख्वाहें माशाल्लाह देखें हम इन लोगों की, मराहत देखें इनकी, अय्याशियाँ देखें इनकी, इनके शाहाना अखराजात देखें, और ऊपर से चोरी, ऊपर से सीना जोरी, मुंतखब नुमाइंदों की शिकायत को नहीं सुना जाता। तो आज भी के इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस 25 साल पहले जिस तरह थी उसी तरह है। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार 25 साल गुजर गए, इतने सीओज बदल गए, उसके बाद भी हालत क्यों नहीं बेहतर हुई? तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई मिला हुआ है। जिस तरह सूबे में बताया ना मैंने आपको मिले में, तो कहीं विभाग में भी मिला हुआ है, और भी पता नहीं कौन कौन मिला हुआ है। तो बात कराची के लोगों को के इलेक्ट्रिक के जुल्म से निजात दिलाने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला सिंध अपना किरदार अदा करें। और एक बार फिर आखिर में ये 2 अहम तरीन कामयाबियाँ थी, एक सूबाई असम्बली से आपको मिली, एक इंटीरियर कौमी असम्बली से आपको मिली, जो कि आपके सामने रखना ज़रूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया। बातें करते हैं यहाँ पर, और फिर उसके बाद
देखिए, ये अफसोस की बात तो ये कि अदालतों से भी हमें साफ नहीं मिला। सिर्फ हम ही नहीं, सैकड़ों शहरी गए अदालतों में, हाई कोर्ट गए। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि एक तो गुंडागर्दी, ऊपर से कुंडागर्दी, ये दोनों गर्दियां जो है कि इलेक्ट्रिक के अंदर या पूरे पावर प्रोड्यूसर्स में मौजूद हैं कि गुंडागर्दी। MQM रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हमारे से बिल वसूल करते हैं। खबर देंगे आपको, सिंध के मुहतसिब आला ने शहरी की शिकायत पर CEO के इलेक्ट्रिक को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे शफी बलो से। शफी, बताइएगा क्या शिकायत की गई थी शहरी की जानिब से? जी के इलेक्ट्रिक की मार्केट मार्केटिंग की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी मुहतसिब आला, सूबे मुहतसिब आला के पास। महरीन